bit later. Now, I thought of better of talking to you instead of taking session. I have a lot of things to talk, a lot of pedagogies to talk, but I would like to talk you as a teacher. I had been a teacher of CBSE and NCERT textbooks for 8 years. 2009, I joined as a PGT, and up to 2017, I taught as a PGT in Kendra Vidyalayas. So I had got most of the topics on my fingertips. I know the syllabus of class 11 and 12 are on my fingertips because I was a PGT. Class 9 and 10, 9 and 10, I don't know much. So, but syllabus, I was preparing questions, and also I've got a lot of ideas. Because this year, the NCERT textbook for classes 10 and 12 have been adopted by Madhya Pradesh. What kind of issues you are facing? Let us confine ourselves to mostly academic talk and do not talk about anything administrative. Principal का support नहीं मिला, ये काम दे दिया, वो काम दे दिया. All those things we are not talking. We are just talking of academic support. आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ इश्यूज हुए? Where did you feel some problem in the transaction of new syllabus or the new textbooks that have been assigned to you, so that I can interfere accordingly? I can give you my suggestion as a teacher of NCERT textbooks for 8 years. We'll take some of the queries one by one. I tell you, the queries should be completely related to academics and nothing related to administration. कि मेरे घर में स्कूल में टेक्स्ट बुक नहीं है, प्रिंसिपल ये काम बता रहा है, वो काम बता रहा है, कोरोना हो गया सभी को, बच्चे के पास फोन नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है, ये सब छोड़ दीजिए. पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या होता है, जो आप कंटेंट से रिलेटेड कहाँ प्रॉब्लम फेस किए, सिलेबस से रिलेटेड कहाँ प्रॉब्लम फेस किए, किस चैप्टर में कहीं कुछ इश्यूज आए, कौन सा सेक्शन है, ग्रामर का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, लिटरेचर का है, कहाँ इश्यूज प्रोमिनेंट हुए, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक का इशू था कि आप टेक्स्ट बुक में चेंज कर दो, जो हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, चाहे वो आपके बच्चों को स्मार्टफोन देने का प्रॉब्लम, या आपके प्रिंसिपल को समझाने का प्रॉब्लम, या आपके डाइट से या SCERT से कुछ करने का प्रॉब्लम, अभी इमीडिएटली हम नहीं कर सकते. जो हम कर सकते हैं कि आपके जो इश्यूज आए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक, उसमें कहाँ हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. लेट अस डिस्कस, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली मुझे जो डिस्कस करना होगा मैं करूंगा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. यस, I hope you got my point. Academic assistance, the way you want it from us. Amita Soni, you have raised your hand. Do you have anything to ask? Vijay sir. Let's start from Vijay Tiwari sir. Sir, namaste again. Namaste. Yes, yes. Sir, actually in NCERT textbook, besides the content, you have said we can't do anything. As of now, we cannot do anything. Yeah. Yes. There is one more point. The grammar is not given. That's not there in class. No classes. Grammar, we teach grammar from the context. Now we have come to functional grammar and those grammar translation methods that we are talking of. Let us teach grammar from the context. Every text, every chapter that is given has a lot of grammar related aspects. So say, for example, let me give an example. When I teach a poem called The Road Not Taken, have you Yeah. some poem somewhere? Yeah, it was in our textbooks earlier. Not now. It is not there. Now it is not. If it is not there, I am opening a slide. Give me some time. It is in class 9th. It was in class 9. It is in class 9th. All of you. Class 11. No, sir, it has given in class 9th. Now it is in class 9th. Okay, now whether it is there or not there. Sir, it is there. It is there in class 9th. All right. So if it is there, now when you teach the poem, what are the things you teach over there? When you teach a poem, those who have taught the poem, let us discuss a bit. Those who have taught the poem, what are the things you have taught? Yes. We give, first of all, some introduction about the poet Robert Frost.
then what type of poems he writes, his writings, and after that we go through the poem Okay. and we tell that there are various choices available in life, and if we make any choice, it makes a lot of difference in our life pattern. Okay. That is the basic concept the poet wants to convey, Okay. and Very good. that he wants to narrate symbolically with the help of two roads. And second, there are some things which are routine matters. There are some ways which are very difficult or challenging. So the poet wants to take challenging tasks. Okay. That is also one of the message from this poem. So you try to give the message from the poem. Yeah. All right. Anyone else? And we also explain the words. Yeah, Yes, yes. words also. Who is there? Good afternoon, sir. Good afternoon. Apart from the explanation of the poem, we also tell them what are the figures of speech and what are the parts of grammar are used in that particular poem Like, in any line, like metaphors, similes, idioms, etc. okay. Anything, anyone else? Anyone else? Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Sir, actually, we can teach when we teach any, let's say, prose or poetry. We can teach all the aspects of grammar. We can tell the literary meaning. We can summon the poem by giving the synopsis, word meanings, vocabulary, opposites. On our, but what we suggest is when we teach poetry, we don't interfere much with the grammatical part in poetry. Rather, teaching the gist. Most of the time we use, as Vijay sir was again asking about teaching the grammar. Actually, I also do believe that we always teach grammar while teaching the text, because text is the only mirror where the student can interact with the language in the best possible way, where he can see the usage of all the tenses, speeches, voice, narration, direct, indirect, everything Right. will get in the text. Right. Very I good. do this. In the prose, I teach all the grammatical aspects which I get in the lesson. For example, if I have sentence in past tense, I can teach them their past tense, use of helping verbs. Sometimes if I see a sentence in a prose or anywhere which is in reported speech, I decide and plan a lesson in such a way that I am going to teach reported speech in that particular lesson. I plan in such a way, and then I take that topic along with that. So that is the best way to teach grammar while teaching the text. I mostly don't prefer to teach grammar using poetry. Thank you, sir. Right. I think you can see my screen. Is it there? Yeah. Look Yes, at the, this is one of the PowerPoint I used to, use when I was teaching this poem. This poem has these verbs. I'm lifted direct verbs from the poem. Divorced, stood, looked, bent, took, wanted, warned, kept, doubted. There cannot be any better example than this to teach simple past form. The sentences that are used, I'm just referring to the poem. You see that the poem is on your screen now. Look at this term. I think the poem is visible on the screen. Yeah. Divorced. Two rows divorced in a yellow wood. Complete sentences. Though poetry we should not use for teaching sentences or grammar, but this sentence has very good grammatical accuracy, is very much there in this poem. Two rows divorced. I could not travel both. I could not travel. I stood, or longer I stood. I looked down. Then I took the other. Worn out.
warned them, had trodden. Can we just give 2 or 3 words and ask the learners to find out more words from this poem? The words that are there, not in the main form, but has ed, d forms. I think class 9, 10, 11 students can easily figure it out. And then say that, look at this. This is the poet is talking about something that has happened in the past. He was in the woods and he forgot the way and he got lost and he had to make a choice or decision. So all the sentences, all the verbs that are used in this line, in this poetry are in past tense because it talks of the past experience. It tells a story of what happened earlier with the poet. Maybe an anecdote, a story about what happened with him earlier. So whenever you talk about something that has happened in the past, you use second form of the verb. Can't we say that? Do we need to go and say that टेंस 2 तरह के 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर? फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट है. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं. सर ऑडिबल प्रॉब्लम आ रहा है सर, सुना नहीं दे रहा सर. मेरी आवाज नहीं आ रही है विजय सर? कैन यू? आ रही है, मुझे तो आ रही है सर. आप थोड़ा ठीक करिए सर. Audible sir, very clear. Yes. So do I need to depend on the like complete the teaching of grammar, which is very very odd, thing of the past? आपको अभी ग्रामर को लेके पढ़ाएंगे रूल्स तो बोरिंग हो जाएगा. आप ग्रामर के लेसन शुरू कर दीजिए और ग्रामर के एग्जांपल्स देना शुरू कर दीजिए, क्लास बोरिंग हो जाएगा बिकॉज दिस विल बी अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट. रादर इज अ वेरी कॉन्क्रीट वे ऑफ टीचिंग ग्रामर. You teach one small element from the poem or the story that you're teaching. See that whether the poem is in present, past, or future. You have to do some exercise. And you have all the autonomy now. Earlier, अगर आपको ग्रामर के सारे दे देंगे बुक्स चैप्टर्स पढ़ाने के लिए, there is no limit to that कि आप कितने क्लासेस लेंगे. लेकिन अगर ये एक क्लास में एक छोटा सा फॉर्म पढ़ा दे रहे हैं वर्ब का, वो क्लियर भी हो जाएगा और बच्चे उससे सीख लेंगे. डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा उनको. तो आप 2 काम कर रहे हैं डायरेक्टली, एक तो पोएट्री भी पढ़ा रहे हैं, दूसरा उनको वर्ब भी पढ़ा रहे हैं. तो ग्रामर वगैरह जो है, इसलिए क्लासेस 9, 10, 11, 12, क्लास 9, 10 में तो ग्रामर अभी भी है सीबीएसई में भी. क्लासेस 11 एंड 12 हैव नो ग्रामर. Instead, class 11 में सीबीएसई के सिलेबस में देखिएगा, they have given editing as many of the tasks. उसमें सेंटेंस में एरर दे दिए, some verbs, some lines are given and they're broken into parts. Some sentences are broken into parts. Every sentence has got, every line or sentence has got some error, and they are asked to find errors related to grammar, whether it's a verb, whether it's an article, whether it's a preposition, whether it's a direct or indirect speech or anything else. They give those and ask you to kind of find the errors from there. So I think this is called grammar, teaching grammar from the context. Instead of teaching it directly, let us teach them from the context and try to figure out as much grammar as possible. Up to class 10, they have got class 3, 4 से तो वो parts of a speech पढ़ते आ रहे हैं. Class 3, 4 से वो article पढ़ रहे हैं. 5 वगैरह में तो उनको टेंस आ जाता है, फिर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही चीज को बार बार क्लास 9, 10, 11, 12 में 11, 12 में particularly. I don't think we need to repeat that. A lot of grammar directly has been taught to them in the earlier classes. So let us try to have grammar from the context and pick them from the lessons that are given in the textbook itself. I hope I made myself clear. There are many things. For example, if I am to take about this poem, to talk about this poem, we can start this brainstorming sessions. Like when we can ask children, आप board पे round बना दीजिए, have a lot of brainstorming from them कि what are the choices you make. आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या उसका चॉइस क्लास 10 के बाद लेना पड़ा क्या? से अगर क्लास 11 की पोएम है तो आर यू आस्क्ड टू टेक कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है? सब्जेक्ट के चॉइस मिले. डू मेक चॉइसेस व्हेन यू गो फॉर फूड कि मुझे आज पिज्जा खाना है, मुझे आज पनीर खाना है, मुझे आज ग्रीन वेजिटेबल खाना है. डू मेक चॉइसेस व्हेन यू गो टू परचेज क्लोथ्स. And then you say that you make choices when you have to take some important decision at home. So ask them to talk about choices. That way they will understand it. So have brainstorming session. Then you can bring to the poem. You can also play some audios that are available. You can also go for silent reading of the poem. Like don't read it to them. You read it silently so that they understand it. Ask them to read it silently. You don't read. You read silently means no meaning. You ask the learners to read silently and highlight something. Maybe give them a task कि आप इस पोएम को पढ़िए और इसमें देखिए कि कहाँ पोएट को चॉइस करना पड़ा.
आप जब टास्क देंगे, the learner will read silently and try to find out something. You, because you have already done brainstorming, now let them read silently and ask them to have some kind of activity, and that activity can be like finding out where the poet had to make choice, what kind of choice he has made. The learner will come with an answer. He had to make a choice in the woods. He made a choice of choosing the road. So where, what? They can come up with very simple answers from these, and that way they'll be very directed towards reading. If you ask them to read silently without an activity, वो नहीं करेंगे. आप टास्क दे दीजिए और उनको बोलिए साइलेंट रीडिंग करने के लिए, तो शायद वो कुछ मीनिंग लेके आएंगे. Maybe you can also ask them to find out some unfamiliar words. The words are there, like divorced, undergrowth, trodden. You can also ask them to make, form the small class into groups, maybe a Shakespeare group, a Johnson group, a Dickens group, an Eliot group, and ask them to find out some images, some symbols, some similes, and some verb forms. Now, before you go that, you also explain them कि images क्या हैं. जब आप poem पढ़ रहे हैं तो इसमें wood आ रहा है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा है wood का. इसमें road आ रहा है तो आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा है road का. So those are just images. Some symbols आ रहे हैं, जैसे wood symbol कर रहा है पूरे world को, एक traveler symbolize कर रहा है common man को. So like that you say that these are images, these are symbols, these are similes जहाँ comparison हो रहे हैं verb form. So beforehand I expect कि ये बच्चे वो जान रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए, let them find out, उन्हें पता करने दीजिए. ये सारे images हैं, जैसे roads है, yellow wood है, traveler है, grassy है, leaves है, these are the images. Symbols है, wood world को symbolize कर रहा है, traveler common man को symbolize कर रहा है, two roads fork है, वो dilemma को symbolize कर रहा है, less traveled road कोई new thing को, novelty को, new experience को symbolize कर रहा है. अब इसमें देखिए simile है, comparison between two dissimilar things like as or using the word as or like. इसमें क्या simile है क्या? कोई मुझे बताएंगे अगर आपने simile इस पोएम को यूज करके पढ़ाया है? कोई मुझे बताएंगे simile है क्या यार? इसमें है क्या simile? The line is yes, then कौन बता रहे हैं? Yes, sir. संतोष जी बताइए कौन सी सिमिली है? सिमिली क्या है? पोएम आपको स्क्रीन पे डाल. Sir, as justice as fair. ओके, तो सिमिली फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को बोलते हैं कि आपके लिए दो ट्रिगरिंग वर्ड है. दो वर्ड को ध्यान देना है. पूरे पोएम में क्या दो वर्ड है, और वो दो वर्ड कौन सा होना है? एज होना है और लाइक होना है. पहले देखना है कि एज और लाइक वर्ड है, तो इस पोएम में हमने देख लिया एज वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ सिमिली होने के चांसेस हैं. जरूरी नहीं है कि सिमिली होगा. अब चांसेस मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपैरिजन जो सिमिली में होता है वो टू डिसिमिलर थिंग्स में होता है, यानी थिंग्स मस्ट बी कंप्लीटली डिफरेंट, कैनॉट बी सेम. सो इफ द थिंग्स आर डिफरेंट देन देयर इज अ सिमिली. इफ थिंग्स आर सेम, अगर दो चीज को कंपेयर किया दोनों सेम चीज है तो वो सिमिली नहीं होगा. जैसे मैं बोलूंगा कि शी इज लाइक हर ग्रैंडमदर. अब एक गर्ल को उसके ग्रैंडमदर से, वुमेन से, एक वुमेन को वुमेन से कंपेयर किया, तो क्या वहां सिमिली है? नहीं No, है. sir. नहीं है. इसलिए यहाँ दो रोड का कंपैरिजन हुआ है. एक रोड को लिया, दूसरा भी उतना ही फेयर है, दूसरा भी उतना ही अच्छा है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया. अगर आपने सिमिली पढ़ा दिया तो मिस्टेक हो गया. तो यहाँ सिमिली नहीं है. तो बोलेंगे बच्चे देखो ये एज और लाइक वर्ड तो मिला, लेकिन यहाँ सिमिली नहीं मिला. वो फॉर्म पढ़ा सकते हैं सिंपल पास्ट का. ये देखिए, two roads diverged in a wood. I looked down. I took the other road. I kept the first for another day. I doubted if I should ever come back. I took the road which was less traveled. और बोलिए कि इसी को लेके आप दो दो सेंटेंस बना के दिखाओ. Yes. Then you can also ask them to find many other things like what are the colors used, what is the rhyme scheme, what are the words repeated, what are the two alternates. You can also look for two alternate titles. Say for example, the colors used are yellow, which is wood, trodden, which is black, generally वो crush हो जाता है, grassy, which is green. Why these colors? You can ask them to think. The rhyme scheme is A B A A B. आप देखिए हर स्टेंजा का लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है. पहला लाइन तीसरे और चौथे लाइन से मैच कर रहा है. First line rhymes with third and fourth line,
and second line rhymes with the fifth line. So every stanza has 5 lines. Very simple. बच्चों को बताइए, चलो राइम स्कीम पता करना है. पोइट्री पे आइए, यहाँ पोइट्री है. पहले तो ब्रॉडर डिवीजन दिखाइए कि ये सारे the whole poetry has 5 lines. So देखियो 5 लाइन सभी पोइट्री सभी स्टेंजा में है. ऑल स्टेंजा हैज 5 लाइंस. 5 लाइन है, ये क्लियर हो गया. अब लास्ट वर्ड को देखना है. ठीक है, लास्ट वर्ड में पहला वर्ड को वुड है, इसको ए सिंबल दे दिया. इससे जो राइमिंग करता हुआ वर्ड है उसके सामने ए लिखते जाओ. तो वुड मैच कर रहा है स्टूड से, कुड से. तो ए वुड में पहले लाइन में ए सिंबल, तीसरे लाइन में ए सिंबल और चौथे लाइन में ए सिंबल. तो ए ए ए. सेकेंड लाइन में बोथ which needs with growth, rhymes with growth. So ये नया साउंड है तो बी सिंबल और इधर भी बी सिंबल. तो अब सबको जोड़ देंगे ए बी ए बी. वैसे ही देखना यहां इसमें फेयर rhymes with there and where. फेयर वेयर एंड देयर. तो पहला लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन राइम कर रहा है. क्लेम सेम राइम कर रहा है. सेकेंड और फिफ्थ लाइन राइम कर रहा है. यहां देखिए ले पहला लाइन, डे और वे पहला लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन राइम कर रहा है. सेकेंड ब्लैक और बैक राइम कर रहा है. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन इज राइमिंग while फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन्स आर राइमिंग. सो इसका राइम स्कीम यही हो गया. पहला, तीसरा और चौथे लाइन में सेम राइम स्कीम है, सेकेंड और फोर्थ लाइन में डिफरेंट राइम स्कीम है. इसको ऑल टुगेदर हम पुट करेंगे तो ए बी हो जाएगा पहले स्टेंजा का, दूसरे का सी डी सी सी डी, तीसरे का ई एफ और चौथे का जी एच जी जी एच. सो दिस इज राइम स्कीम ऑफ द पोएम. रिपीटेशन देखिए, वे लीड्स टू वे वर्ड रिपीट हो गया. आई यहां वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है. देन आई टुक, आई वर्ड का रिपीटेशन हुआ है. क्यों? एम्फेसिस देने के लिए रिपीट हुआ. टाइटल, अब बच्चों से बोली कि इसका और कुछ 2 टाइटल सोच के देखो. जैसे डायलेमा एक टाइटल दे सकते हैं, चॉइसेस ऑफ लाइफ दे सकते हैं, selection of roads दे सकते हैं. Ask them to do something. So there are many activities that you can do. You can have also quiz with the learners, have some questions and you can ask them to answer those questions. You can have the group discussion on the topic. For example, which road you would choose and why? आप कौन सा road चुनोगे? You can give them a project. Draw an imaginary picture of the poem. ये पिक्चर बनाओ जहां वो ट्रेवलर खड़ा है, 2 रोड बना हुआ है, इजी ड्राइंग होगा, एक आदमी को खड़ा करना है. मे बी सिमिलर पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के और पोएम जो वुड से रिलेटेड है, या कोई और पोएम फाइंड करो. ब्रीफ बायो स्केच रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखो. इस तरह से कुछ ऐसे फेमस लाइन फाइंड करो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर यूज करते थे. ये आपको स्नोई इवनिंग वाले पोएम्स है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. सो लाइक दैट यू कैन गिव देम अ ग्रुप वर्क आल्सो. क्या फैक्टर है जो डिसीजन लेने में या कैरियर चूज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. What are the factors that are responsible for choosing the right career? So that can relate the poem to their life. Decision making का लाइफ स्किल आप उन्हें बता सकते हैं. आपने से एक ने कहा था एक डायरी एंट्री लिख सकते हैं, डायरी एंट्री दे सकते हैं, ये पास्ट में हो जाएगा. राइट ए डायरी एंट्री एज द रोड व्हिच वाज नॉट ट्रेवल, कि वो जो आदमी है उसने नॉट ट्रेवल रोड को चुना, तो उसको सोच के एज ए रोड आप डायरी लिखो. आप रोड हो, आप कैसा फील कर रहे हो जो आपको सेलेक्ट किया है. ठीक है. या फिर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ एक अगर बायोग्राफिकल टीचिंग करना चाहते हैं कि ये पोएम को बार बार रिजेक्ट किया गया था, as a kind of writer you write a diary as to what did you feel when your poem was rejected in America and then you have to move to England to get your poems published. So diary entry में आप शुरू कर सकते हैं. I'm very sad today. I have been neglected by the traveler. He saw me but he did not travel on. Like that. You give them a starting point and let them complete it. आप एक स्किट प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे कोई प्रॉब्लम आया और कैसे उसको सॉल्यूशन किया. पेयर वर्क दे सकते हैं. तो लाइक आप क्या करोगे, आप किससे पूछोगे जब आप एक अननोन जगह पे आ जाते हो, फोक रोड का है, हाउ विल यू डू दैट. So like the teacher can ask them कि here it will ask, there is something called asking for directions. Direction के लिए कुछ spoken English में phrase use होते हैं. Excuse me word पहले use होता है, उसके बाद में what is the way of, ऐसा use हो सकता है. तो आप बोलो कि ये
आप वहां ट्रेवलर हो, आप फोर्ट पे आ गए, and you don't know which way to take. Now there may be some people around, you go and ask them, maybe the classmates can be people, वो आपके friend हो गए, you ask them about the direction of the place you want to go. So you start with excuse me and you continue further. Excuse me, what is the way of, say, Moti Mahal, or what is the way of, say, Big Lake or something like that. So that way, how kind of you can encourage a kind of activity of pair work or group work or spoken kind of activity. So a lot of things are there. What is the message of the poem? You can ask from the learners. Instead of you giving the message, let them have the message. What makes the winner different? So these are some of the things. And also one more thing, after discussing all these things, one more thing you need to remember, that you should not be giving one meaning of the poem to the learner. One meaning means like आपने poem को पढ़ा, आपके समझ में जो आया वो उसको आपने समझा दिया दूसरे को. Many a time when you read it, the commentaries online, these are the critics who have given their opinion about the poem. The poet has not given a meaning. Poet ने poem लिख के छोड़ दिया. He has not given the meaning. Now every critic, those who have read the poem, they have given their meaning. So why do you want to take their meaning? Why don't you leave learner to get their own meaning? Give them a chance to come up with their own interpretation. Let them decide कि आप इस पोएम को समझ के क्या समझते हो. Individuals response, readers response, reader का response क्या है उस poetry को लेकर. So let them choose or make or create. I use the word create their own meaning instead of like you impose your meaning, which may not be correct also. Like the way you have interpreted the poem may not be correct also. आपने कहीं से पढ़ के एक meaning create कर लिया और बता दिया. Like choices के बारे में ही. तो you have something in mind when you are dealing with the poem. So let the learner also come up with their version of the poem. कि वो इस poem को समझ के क्या, पढ़ के क्या समझते हैं. So that way you can allow the learners also to come up with their own meanings. So I think one of you asked me to discuss about poetry, how to teach poetry. I think I briefed you about this, and I hope I could give you certain insight as to how to approach a poem. Any question up to this point? Sir, I am Rajesh. I want to know that if you want to just recite a poem, then how would you recite it? Come in the touch of the textbook. No formula is there. No formula is there, and no one. Let me first take Rajesh's question, and then I'll come to Manoj sir. Manoj sir, please mute yourself. Manoj sir, please mute yourself. Yes. Yes, sir. Let me first take Rajesh sir's questions. When it comes to Rajesh sir, remain muted. आप mute तो रहिए. Sorry, Manoj sir. अब मैं राजेश sir का question ले रहा हूँ ना. One by one. First Rajesh sir. Okay. When it comes to recitation, of course, the teacher may come up with a model recitation. If you think that you have got a very good voice and clear pronunciation, go for that. Or you can have it downloaded from internet, but do not download many foreign versions. जो अमेरिकन किसी आदमी ने पोएट्री को यूट्यूब पे रिसाइट करके डाल दिया, आप वही क्लास में प्ले कर दिया, नहीं चलेगा. बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा. आपका भी प्रोनाउंसिएशन है, लोकल है, आप अपने प्रोनाउंसिएशन में बोलिए, चलेगा. It's not compulsory that we completely go for foreign or British or American. Mostly British we follow in India. We don't need to go over there. Let the child also come with that. अगर वो pronunciation में blunders कर रहे हैं, blunder का मतलब काफी बड़ा, जैसे नेचर को नटूरे पढ़ दिया. You got the point. फ्यूचर को फुटूरे पढ़ दिया, तो वो ब्लंडर कर रहे हैं, तो उधर आप करेक्ट करिए. लेकिन अगर वो नेचर से रिलेटेड नेचर या ऐसा भी कुछ बोल रहा है, क्लोज आ रहा है, तो चलने दीजिए. अब मॉडल प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अपने लेवल पे वी गो फॉर इंडियनाइज्ड प्रोनाउंसिएशन. सो इफ यू विश and you think that you have a model recitation, you go with that, read it once, go for reading as good as possible. Try to have rhymes instead of like pronunciation, go with the rhymes. जो poetry के last में rhyme दिए हुए हैं ना, उस पे थोड़ा focus करिए. That will make poetry more musical, or also give chance to the learners to come with their own versions. और वो आप उनको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे दीजिए ना, बहुत सारे बच्चे काफी क्रिएटिव करके लाएंगे. You read it once in the class and say that आप लोग आज घर पे जाना,
पोएम को 3-4 बार पढ़ना और आपके स्मार्टफोन में इसका ऑडियो रिकॉर्ड करना। आप ऑडियो ऑन कर लो और एक बार इस पोएम को पूरा पढ़ के मुझे ऑडियो भेज दो। You see that how wonderful that will be. सारे बच्चे अपने अपने तरह से पढ़ के वो पोएम आपको भेज देंगे और वो वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। 2-3 बार वो पढ़ लेंगे। It will be an interesting activity and they'll all read it. They will, और वो उसको रिकॉर्ड करने से पहले 3-4 बार अच्छा से पढ़ेंगे। वो देखेंगे कहाँ एरर हो रहा है, उसको 3-4 टेक लेके रिकॉर्ड करेंगे और उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके यू आर हेल्पिंग देम ऑल्सो टू लर्न समथिंग। सो यू कैन आस्क, भले आप उसको देखो या ना देखो, आप सुनो या ना सुनो, आप बच्चे को बोल दीजिए कि आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो। आप व्हाट्सएप पे सारे बच्चे ये पोएम को एक बार मॉडल डिसाइड करो और एंड यू सेंड इट टू माय व्हाट्सएप। दैट वे ऑल ऑफ देम विल बी वेरी इंटरेस्टेड और उसे में से 2-3 बच्चे को अप्रिशिएट कर दो। अगर थोड़ा टाइम मिले तो आप उनको फीडबैक पर्सनल कॉल कर दो, नहीं आपने बहुत अच्छा किया। क्लास में मोटिवेट कर दो, यू डिड इट वेरी वेल, एक्सेलेंट जॉब, कैन यू डू इट इन द असेंबली ऑल्सो। और ऐसे बच्चे को लेके आइए। So that way they'll be very, very interested to do something that you assign to do. So model recitation, yes, the teacher should do. English or British accent or American accent to follow. YouTube में blindly accent को copy कर play मत करिए। आप देखिए इंडियन वर्जन में किसी ने recite किया है तो उसको play कर दीजिए। Otherwise you go for your own version or let learners have their own version of the poem. All right? Their own meaning, their own recitation. Yes. Thank you, sir. Thank you. Manoj sir. Yes, sir. When we come in the touch of high school English textbook, I think each poem has some special lesson, message, theme, what we teach in the class, and we learn the students how to cope up with the life problems. Right. I think in all the poems I found it, the students become more thoughtful, more loving for birds and animals also, not for only human being but for birds and animals. It depends on the way of interpreting. So you want which to type of what's the way we are interpreting the poem. Right. Yes, sir. I want to say this only. Right. Thank you. So if you want some moral values to be derived from the lessons, let it be. Like from this poem, if you want to teach them about the way they should take decisions and how those decisions will help them, life skills of decision making, go ahead. Have a debate organized on them. I've said that pair work, group work, you can go for that. So if there are certain morals, but do not impose it. What I believe bad is happening in poetry is that imposing the teacher's point of view. कि इस poem में decision making सिखाया गया है, decision making ही करना है. No, let them decide. So don't impose your ideas on the learners. Let them come up with their own version of the idea. Thank you. Any other? राखा पुष्पा जी बताइए, anything to add? Right, so I think I discussed about prose reading, poetry reading. If you don't have any query, can we go for the prose reading as well? How to teach prose in the class, because this is your day-to-day work, and I think you should get inputs on this prose and poetry